Hello everyone, welcome back to my channel. So today I have made this video for the fellows and residents to understand the importance of auditory and visual feedback while performing phacoemulsification. And I have always emphasized that whenever you want to start the phaco or you want to learn the phaco, you need to master the visual feedback, auditory feedback and the tactile feedback. So through this video, you will be able to appreciate the visual and auditory feedback. And for the same purpose, I have kept this video unedited so that you can have a look in a real time. And for the originality of the sounds, I would advise you to wear the headphones or earphones and keep your focus at the distal end of the phaco tip and IA probes. And then you will be able to correlate with the voice of the machines, which it makes while performing it. One more thing is that you need to practice the foot pedal positions 1, 2 and 3 for at least 15 to 20 times with open and closed eyes, which should be done in the bowl or the dummy eyes. So this is my personal advice to the beginners, and let's start and enjoy the video. ये पानी आता रहेगा अंकल, है ना? कोई साढ़े दिक्कत नहीं। 15 15:30 इधर तो क्या नाम होगा उम्र का मुंह के ऊपर हुआ है कपड़ा रहेगा मुंह खोल के सांस लेना दोनों आंखें खोल के रखनी है लाइट दिखना है लाइट में देखते हैं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मुंह से बोलना आँख ज़्यादा नहीं सर उठा अंकल जी अचानक से मत खा दो, है ना? सर उठाओ आँख के अंदर औजार है आपके, पता है आपको? ना दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो, वरना अरे पहले ऊपर कर लो आए खोल लो आए मतलब 15:30 और 15:30 15:30
किसका है? बात कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ ओके। हाँ 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 करवाएंगे। के काम तो ठीक। ऑन कर रेडी कर दो। रेडी। ड्रिप लगा। आप खोल नहीं आप खोलेंगे। हो गया, कर दिया ना, बढ़िया से करा लिया। ना अब कान खोल के रखना है, ठीक है। जैसे बोलने का वैसे करना।